श्योर। सो जो भी कमोडिटी की हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज आर ग्लोबल नाउ, एंड सब कमोडिटीज के प्राइसेस ग्लोबली डिसाइड होते हैं डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर हर कमोडिटी की बात करें तो लास्ट 2 साल में स्पाइक आ गया था हर कमोडिटी के प्राइसेस में। उसका मेन कारण ये भी था कि सप्लाई कंस्ट्रेंट्स थे, काफ़ी सारी जगह पे फैक्ट्रीज बंद थी खास करके चाइना में, और लॉजिस्टिक्स इश्यूज भी थे जिसकी वजह से प्राइस काफ़ी बढ़ रहे थे काफ़ी कमोडिटीज़ के। तो इसके कारण क्या हुआ था कि जो डिमांड था वो भी थोड़ा इम्पैक्ट हो गया था क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। एंड इसके साथ साथ हमने देखा कि सब कंपनीज़ के मार्जिन्स में भी काफ़ी इम्पैक्ट हुआ, खास करके जो कमोडिटीज़ को रॉ मटेरियल्स के जैसे यूज़ करते थे। तो आगे जाके अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ में स्लो डाउन है, खास करके यूएस एंड यूरोप में, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो दूसरी कंट्रीज़ पे भी आना ही है। ज़्यादा देर तक कोई भी इकोनॉमी को डीकपल्ड रहना ईज़ी नहीं रहेगा। इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है क्योंकि हमने पास्ट में जब भी ये इन्फ्लोज़ का डेटा देखा है, तो जब भी ये मार्केट्स हीटेड रहते हैं या बुल मार्केट में रहते हैं, तभी मिड एंड स्मॉल कैप में इन्फ्लोज़ ज़्यादा रहते हैं। बट आज जब हम बात करें, द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपनीज हैव मेड 52 वीक क्लोज, तो ये बैकग्राउंड में अगर मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में इन्फ्लोज आ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज ये फंड्स में इन्फ्लोज तब आना जब मार्केट ख़राब है बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज लिक्विडिटी इजीली अवेलेबल होती है। जब बुल मार्केट होता है तभी स्मॉल एंड मिड कैप्स में लिक्विडिटी पूरा ड्राई अप हो जाता है, तो वो टाइम पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अ, ये भी है कि ऐसे वॉलेटाइल मार्केट्स में स्मॉल एंड मिड कैप्स और भी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। तो डेफ़िनेटली मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर स्मॉल एंड मिड कैप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका टाइम होराइज़न 10 इयर्स प्लस रहेगा, तो ही सफिशिएंट अल्फ़ा बना पाएँगे आप। अदरवाइज़ इफ़ अराउंड 5 इयर्स के आसपास अगर इन्वेस्ट करें तो मोर और लेस लार्ज कैप जितना ही रिटर्न मिलता है, और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है। तो फिर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की अगर बात करें तो मिड एंड स्मॉल कैप की शॉर्टर टाइम पीरियड्स में इतनी ज़्यादा नहीं होती है, अनलेस आपका टाइम होराइजन 10 इयर्स प्लस। एज आई सेड, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स डोंट नीड मोर देन 4 to 5 फंड्स इन देयर पोर्टफोलियो, एंड दैट इंक्लूड्स एमएफ्स, पीएमएस, एआईएफ, whatever products that are available in the market. I think for a retail investor, say who is investing only in mutual funds and who has capital less than 50 lakhs, then I think 5 funds, 3 equity and 2 debt funds should take care of the corpus that the retail investor has. Out of the 3 equity funds, I would say that 2 can be the core portfolio, which is 1 large cap and 1 flexi cap fund. And the core should be around 80% of the portfolio, equity portfolio, and the balance 20% satellite would be, say, one small and mid cap fund. Uh, and then, depending on the age and the risk appetite of the investor, I think some allocation should also be there to the debt funds. 2 debt funds should be more than enough. One on the shorter end of the curve, which takes care of the emergency needs and short-term needs, and the other one for the longer-term debt allocation. आपने एक अच्छी बात कही, सिंपल चीज़ें बोरिंग लगती है लेकिन वो सिंपल चीज़ें ही अच्छी रहती है इन्वेस्टर के लिए। सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड्स एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें निवेश ना करें मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स के लिए तो ही बेटर रहेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जब कोई सेक्टर हॉट रहता है या जब कोई सेक्टर अच्छा कर रहा होता है, तभी वो फंड का एनएफओ आता है या वो फंड बेचा जाता है आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। तो ऐसा होता है कि जब कोई भी रिटेल इन्वेस्टर उसमें निवेश करता है तो उसके बाद के जो रिटर्न्स होते हैं, फ्यूचर रिटर्न, वो इतने खास नहीं रहते हैं। तो अनलेस कि आपको कोई सेक्टर के बारे में डीप नॉलेज हो और आपको लगता है कि उधर लॉन्गर टर्म वो कोई सेक्टर अच्छा करेगा, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है जो ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अच्छा किया है, एंड उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू पीएसयू बैंक्स, एंड अगर ये मार्केट शेयर शिफ्ट फ्रॉम पीएसयू बैंक्स टू प्राइवेट सेक्टर कंटिन्यू रहेगा, तो ऐसे टाइप के सेक्टोरल फंड्स अच्छा करेंगे। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें मिनिमम 65% इक्विटीज़ में होता है एंड बाकी का डेट में एलोकेशन होता है। तो डेफिनेटली रिटायरीज़ के लिए इतना भी सूटेबल नहीं होता है, अनलेस कि रिटायरी के पास काफ़ी बड़ा कॉर्पस ऑलरेडी है
डेट फंड्स में एंड थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहता है इक्विटीज़ को, तो थोड़ा बहुत एक्सपोजर ले सकता है aggressive hybrid funds को। ये एक ऐसी कैटेगरी है जो काफ़ी मिससेल हुई है पास्ट में, जहाँ पे गारंटीड रिटर्न्स दिए जाते थे कि पर मंथ आपको इतना मिलेगा एंड वो हिसाब से काफ़ी इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करते थे एंड कंपेयर करते थे एफडीज से, जिसमें फिक्स रिटर्न मिलते हैं। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत मिससेलिंग हुआ था पास्ट में, बट आई थिंक इस कैटेगरी में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर एंड इन्वेस्टर को खुद का एसेट एलोकेशन नहीं करना है कि 70% इक्विटी एंड 30% डेट में डालना है, so instead of allocating it himself, he can put it in a aggressive hybrid fund and let the fund manager decide where to allocate this 70% in equity and where to allocate the 30% in debt. Don't spend too much, and in bad years, maybe you can take some money out of your savings, but over a longer period of time, have a stable increase in your standard of living instead of spending frivolously in very good years. Other thing is that stick to your goals and invest with that mindset. Have a asset allocation in place and stick to that for a longer period of time. Have moderate return expectations from the equity markets. Don't have abnormal expectations of 20% plus. So some years you may get those returns, but over a longer period of time, have moderate return expectations. There is no other asset class which can beat inflation like equity does, and I think equity beats any other asset class on beating inflation. Hello everyone, मेरा नाम नम्रता अरोरा है and welcome back to yet another exciting episode of Mutual Funds की बात। Mutual Funds की बात में हम global और Indian economic conditions, commodities, stock markets and of course mutual funds के बारे में बात करते हैं। And in every episode we try to get someone with a lot of knowledge, with a lot of experience in the stock market and the mutual fund space. तो आज भी हमारे साथ we have someone really special. Today we have with us Mr. Raj Mehta. So Mr. Raj Mehta began his career as an intern with PPFAS Mutual Fund in 2012 and swiftly moved up the ranks. Currently वो PPFAS म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजमेंट टीम का हिस्सा है। मिस्टर राज ने जो है he has also earned a certificate for the NSE debt market module issued jointly by FIMMDA and NCFM. He is also featured as a regular participant on various TV channels and a columnist in select financial publications. मिस्टर राज ने जो है अपना BCom और MCom मुंबई यूनिवर्सिटी से किया है and he is also a fellow member of Institute of Chartered Accountants of India and a CFA charter holder. Hello everyone and welcome back to Mutual Funds की बात। Today we have with us Mr. Raj Mehta from Parag Parak Mutual Fund. Hi Raj, welcome to wonderful episode of Mutual Funds की बात। You know हम ये बहुत time से ये episode series create कर रहे हैं and we are very glad to have you with us today. So let's start with the questions, Raj. You know अगर हम देखें तो इंडिया का जो market capitalization है it dipped below $3 trillion for the first time in 9 months. And I think it primarily because, you know, selling pressure काफी बढ़ गया because of the instability of banks in the US and the Europe, right? Now, because देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे investors हैं who tend to follow an indicator called the Buffet indicator या फिर उसको हम market cap to GDP ratio भी बोलते हैं, and every time market goes through correction, the ratio gets attractive and so does the valuation. तो आपकी जो opinion में can the Indian stock market bounce back from this setback या फिर जो recession का fear है, you know, do you see उसकी वजह से बाउंस बैक में ज़्यादा टाइम लग सकता है? Sure. So let's zoom out a little bit and look at it from a zoomed out view. So post global financial crisis, we saw central banks all over the globe printing money, taking interest rates to almost zero or negative in some countries. And post that, even post COVID, we saw even further liquidity being pumped and the interest rates remaining low for a long period of time. So finally, we have seen the interest rates being hiked globally, mainly in US, followed by European countries. And at the same time, we have seen some liquidity being sucked out of the system. So the era of easy money is behind us. Going forward, the liquidity will not be as easily available as it was over the last 15 years. What will happen eventually is that the private equity
companies will find it very difficult to raise fresh money, and all the businesses which were dependent on fundraise, be it debt or equity, will find it very difficult to grow at a pace at which they were growing in the past 5 to 7 years. So that is something which we'll see across the system, across the board, across countries, and sectors which are dependent on capital will find it difficult to grow. So investors were also used to making easy money, especially post COVID. In the first couple of years, it was very easy to make money because of the easy money and the liquidity available in the system. So going forward, I think firstly the returns expectations should be moderated, and the time horizon that the investor has to be elongated. So anything less than 3 to 4 years should not be allocated to equities, and it should be more on the fixed income side. If you have a 3+ kind of time horizon, then only you should allocate money to. आई गेस इक्विटीज के लिए हम एनीवेज बोलते हैं कि टाइम होराइजन जनरली लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए, तो दिस सिचुएशन प्रॉब्ली reinforces that. Yeah. Okay. So again, if we look at the global slowdown, so what impact do you think have the commodities market in India seen in terms of the global slowdown? क्योंकि अगर हम देखें तो चाइना जो है अभी इकोनॉमिक रिकवर, but obviously it's quite unevenly spread out across different sectors, right? तो क्योंकि हमने देखा था कि काफ़ी इन्वेस्टर्स ने जो है commodity stocks में इन्वेस्ट किया था during 2022, लेकिन not many of them would be happy at this point in time. So what is your take on the global slowdown on the commodities market as such in India? श्योर. सो जो भी कमोडिटी की हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज आर ग्लोबल नाउ, एंड सब कमोडिटीज के प्राइसेस ग्लोबली डिसाइड होते हैं डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई. तो अगर हर कमोडिटी की बात करें तो लास्ट 2 साल में स्पाइक आ गया था हर कमोडिटी के प्राइसेस में. उसका मेन कारण ये भी था कि सप्लाई कंस्ट्रेंट्स थे, काफ़ी सारी जगह पे फैक्ट्रीज बंद थी, खास करके चाइना में, और लॉजिस्टिक्स इश्यूज भी थे जिसकी वजह से प्राइस काफ़ी बढ़ गए थे काफ़ी कमोडिटीज़ के. तो इसके कारण क्या हुआ था कि जो डिमांड था वो भी थोड़ा इम्पैक्ट हो गया था क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था. एंड इसके साथ साथ हमने देखा कि सब कंपनीज़ के मार्जिन्स में भी काफ़ी इम्पैक्ट हुआ, खास करके जो कमोडिटीज़ को रॉ मटेरियल्स के जैसे यूज़ करते थे. तो आगे जाके अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ में स्लो डाउन है, खास करके यूएस एंड यूरोप में, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो दूसरी कंट्रीज़ पे भी आना ही है. ज़्यादा देर तक कोई भी इकोनॉमी को डीकपल्ड रहना ईजी नहीं रहेगा. तो थोड़े टाइम के लिए डीकपल्ड रह सकते हैं अगर खुद के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन दिस ग्लोबलाइज सिनारियो डीकपल्ड रहना बहुत डिफ़िकल्ट है. तो डेफिनेटली ग्लोबल स्लो डाउन की वजह से ये कमोडिटीज़ में भी थोड़ा स्लो डाउन देखना मिल सकता है आगे जाके. और दूसरा ये भी है कि चाइना में ओपन अप होने से डेफिनेटली इकोनॉमिक रिकवरी देखा है चाइना में, एंड चाइना का जो डिमांड है खास करके कमोडिटीज़ का बहुत ज़्यादा है. तो थोड़ा बहुत रिकवरी डिमांड में आ सकता है, बट चाइना का भी जो हाई ग्रोथ के जो ईयर्स थे वो पीछे है. अभी आगे जाके चाइना भी इतना फास्ट ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि उनका बेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. तो डेफिनेटली कमोडिटीज़ इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आई थिंक थोड़ा स्लो डाउन देखने मिल सकता है. So I think we need to be prepared कि commodities में slow down हो सकता है, right? Yes. So now let's talk a little bit about different investment styles, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे investment styles होते हैं, and we have seen कि हर fund जो है वो एक specific investment style को follow करता है. Interesting thing is कि सारे जो investment styles होते हैं वो अलग अलग perform करते हैं different market cycles, right? For example, value style will probably outperform during bearish market. So considering this, एक investment style चाहे वो growth हो, value हो या blended style हो, कितना important होता है जब हम एक equity mutual fund में पैसा invest करते हैं. So in your opinion, investors को क्या देखना चाहिए investment styles while investing, and why should they look at the different investment styles? Yeah, I think it doesn't matter whether the investment style is growth, value, blend, or a mix of everything.
what is important is to stick to a strategy for a longer period of time, because some strategy may not work for 4 or 5 years in a row, but in the sixth year it will give you returns, abnormal returns that will take care of the past 5 years of underperformance. So I think that is very, very important to stick to a strategy for a longer period of time. And the even more important thing is to communicate the strategy to the investor. So the end investor should eventually understand the strategy of the fund manager, and he has to match the wavelength with the investment manager, be it either in terms of time horizon or the style of the investor, or being patient when you see underperformance for a longer period of time. So we have seen this play across cycles. We have seen a very famous investment manager being overweight on PSUs for a long period of time, and he did not do well, or he underperformed the market for 4 or 5 years in a row. But the next 2 years took care of the underperformance that he had in the previous 5 years. Definitely, I think that more important thing is to stick to a strategy and communicate it well to the investors. Also, on the strategies, one thing is that people define value and growth in different ways. So everybody will have their own definitions, and those definitions also evolve over a period of time. I think value without growth most of the times is a value trap, and growth without value will not give you alpha over longer period of time. So I think growth without value, I think it will give you subpar returns, or maybe not. You may not be able to beat inflation also. So I think definitely you need to have a blend of both, and either strategy may or may not work for a short period of. So do you think it's fair to say कि as an investor हमें कोई भी एक value investing style पे नहीं invest करना चाहिए? We should ideally have a mix, different mutual funds with different types of investment styles. Do you think it's fair to say that? So that also is possible. And secondly, most importantly, you should understand the philosophy and the process that the end investment manager is following. So if, for example, if an investment manager is following a process where he is investing in a business and he wants to be a partner in the business for a longer period of time, then your time horizon also should match that. So if your time horizon is 2 to 3 years, then probably your wavelength will not match with that of the investment manager, and your returns will be very different from what the end fund returns are. So that is also very, very. Okay, absolutely. All right. Okay. अब थोड़ा different categories of funds के बारे में discuss करते हैं. Let's start with small cap and mid cap funds, क्योंकि I think small cap and mid cap funds as a category में हमने बहुत interest देखा है, especially in the last 3 quarters. And अगर हम देखें तो small cap funds में जो in net inflows आए वो close to 15,000 odd crore rupees, and mid cap funds में close to 14,600 odd crores. तो आपकी opinion में should investors pick up मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड, स्पेशली जब ऐसा वॉलेटाइल मार्केट चल रहा है, तो क्या हमें मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है, क्योंकि हमने पास्ट में जब भी ये इन्फ्लोज का डेटा देखा है, तो जब भी ये मार्केट्स हीटेड रहते हैं या बुल मार्केट में रहते हैं, तभी मिड एंड स्मॉल कैप में इन्फ्लोज ज़्यादा रहते हैं. बट आज जब हम बात करें, द हाइएस्ट नंबर ऑफ कंपनीज हैव मेड 52 वीक क्लोज. तो ये बैकग्राउंड में अगर मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में इन्फ्लोज आ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज ये फंड्स में इन्फ्लोज तब आना जब मार्केट ख़राब है बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज लिक्विडिटी इजीली अवेलेबल होती है. जब बुल मार्केट होता है तभी स्मॉल एंड मिड कैप्स में लिक्विडिटी पूरा ड्राई अप हो जाता है, तो वो टाइम पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत डिफिकल्ट होता है. ये भी है कि ऐसे वॉलेटाइल मार्केट्स में स्मॉल एंड मिड कैप्स और भी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है. तो डेफिनेटली मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर स्मॉल एंड मिड कैप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका टाइम होराइजन 10 years प्लस रहेगा, तो ही सफिशिएंट अल्फा बना पाएंगे आप. अदरवाइज इफ़ अराउंड 5 years के आसपास अगर इन्वेस्ट करें, तो मोर और लेस लार्ज कैप जितना ही रिटर्न मिलता है, और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है. तो फिर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की अगर बात करें, तो मिड एंड स्मॉल कैप की शॉर्टर टाइम पीरियड्स में इतनी ज़्यादा नहीं होती है, अनलेस आपका टाइम होराइजन 10 years प्लस का हो.
दूसरी बात ये भी है कि स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स की अगर बात करें तो साइज़ ऑफ द फंड भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद अगर फंड बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो नंबर ऑफ कंपनीज बहुत ज़्यादा बढ़ हो जाती है वो फंड में, बिकॉज लिक्विडिटी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो जो फंड जो ये कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है, उनका प्रोसेस भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप में प्रमोटर क्वालिटी, बिजनेस क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें ये नहीं कह सकते कि ये सेक्टर अच्छा लग रहा है तो वो सेक्टर की सब कंपनीज में इन्वेस्ट कर देंगे। इंस्टेड बॉटम्स अप बेसिस पे हर कंपनी को देखना पड़ेगा कौन सा प्रमोटर की क्वालिटी अच्छी है, कौन से बिजनेस अच्छा है, एंड अकॉर्डिंगली इसमें ऑल्सो ये जो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स होते हैं, शुड दे बी पार्ट ऑफ अ कोर पोर्टफोलियो और सैटेलाइट? डेफिनेटली सैटेलाइट पोर्टफोलियो। कोर पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो आई थिंक लार्ज एंड फ्लेक्सी कैप फंड होना चाहिए कोर पोर्टफोलियो में, एंड मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स सैटेलाइट। सो विच मीन्स अगर हमारा हम 100% देख रहे हैं हमारा इक्विटी पोर्टफोलियो का एलोकेशन, तो उसमें कैन वी से 20% तक मिड और स्मॉल कैप में रह सकता है? Depending on the risk appetite, that number will differ, but roughly you can say that 80% should be core, 20% can be set. And satellite will not be just small and mid cap. Satellite would also be a few other categories, maybe sectoral and Correct. It would include maybe say an international fund or exactly. some other. So we'll talk about these funds and you can tell us a little more. All right, okay. तो अगर हम देखें बहुत सारे यंग इन्वेस्टर्स को, राइट, दे टेंड टू बिलीव कि दिस इज अ टाइम कि हम ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, कंसिडरिंग व्हेन यू आर यंगर यू हैव मोर टाइम एंड, राइट। तो ये परसेप्शन रहता है जिसकी वजह से हमने देखा है कि बहुत सारे जो यंग इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्मॉल कैप या सेक्टर फंड से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, राइट। सो इन योर ओपिनियन जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं इन एन इन्वेस्टर्स एक्विटी पोर्टफोलियो, स्पेशली जब हम अभी की मार्केट के बारे में बात करें। मान लीजिए कि अभी कोई इन्वेस्टर एंटर करना चाहता है या अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता है, देन शुड ही स्टार्ट विद सेक्टरल फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, या फिर लार्ज कैप फंड्स, एंड हाउ मच एलोकेशन शुड ही हैव ऑफ maybe large cap in the portfolio? So, irrespective of where the stock markets are or how volatile they are, I think large cap funds is a large part of the core portfolio that any investor should have. And in this category, passive funds are a massive competition to the existing large cap fund. Simply because index itself reconstitutes itself very frequently. So the good performing stocks become higher weightages in the index over a period of time, and the bad performing stocks exit from the index. Outperforming the index or the benchmark here is very, very difficult, especially after the active management fees that these large cap funds charge, and hence I think passive funds are a very good bet in this category. And out of the core portfolio, I think 50% of the core portfolio can be in large cap funds, and the balance 50% can be in flexi cap funds. That should be a good allocation for any investor. Fair enough. So इसका मतलब ये है कि अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो लार्ज कैप से शुरू करिए, नॉट स्मॉल कैप एंड फंड्स। आई मीन वी कैन कंक्लूड दैट फ्रॉम योर स्टेटमेंट। Yes, yes. Okay, all right, okay. So let's talk a little bit about the new income tax regime, right? So अब new income tax regime has become a default, जिसकी वजह से जो ENSS फंड्स में जो पहले इतना इंटरेस्ट होता था ना वो बहुत कम हो गया, बिकॉज काफ़ी इन्वेस्टर्स को लगता है कि अगर हम नया टैक्स regime फॉलो करने वाले हैं तो फिर ELSS भी, अब ATC का तो इन्वेस्टमेंट्स का बात ही नहीं आता, तो फिर ELSS फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करें? इट्स पॉसिबल कि शायद कुछ सालों में हम ये देखें कि ELSS फंड से लोग एग्जिट कर रहे हैं, राइट, एट सम पॉइंट इन टाइम, इट्स पॉसिबल। सो इन योर ओपिनियन क्या इन्वेस्टर्स को ELSS फंड्स में पैसा कंटिन्यू करना चाहिए, कंसिडरिंग नाउ इफ कोई नया टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है तो उसको शायद टैक्स बेनिफिट का उतना वो ना हो, एंड एट द सेम टाइम ATC जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जनरल रिटायरमेंट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं मोस्टली, राइट? तो हाउ कैन एन इन्वेस्टर मेक यूज ऑफ फंड लाइक दीज, लाइक ELSS फंड्स, टू गेट टू दैट गोल? So, if you look at both old and new tax regime, my sense is that the entry-level taxpayers or someone who has an income around 12 to 15 lakhs, up to 12 to 15 lakhs, and the economic, Taxable I would say, yeah, taxable income,
and the HNIs who have more than 5 crore kind of bracket. So taxpayers on both ends of the spectrum, I think they will shift to the new regime because the laws have been made in such a way that the tax payable for these investors is much lower in the new regime. So, uh, but there is a middle bracket of investors, say between 12 to 15 lakhs to 5 crores, though the number is very less. Yes, but it's a big range. And for most of these investors, especially those who have housing loans and they are paying EMIs or they take HRA exemption, I think they will still stick to the old regime, and the ELSS, at least for the next 2 years, for them will still remain relevant, or the ATC overall bracket will still remain relevant. Uh, but clearly, over the past couple of budgets, we have seen that the government's focus is clearly towards the new regime, and the preference is clearly visible given the tax breaks that have been given to the new regime. Uh, the focus also has been towards ease of compliance and hence complete removal of deductions and the exemptions that the investor gets. So, definitely, the shift is towards the new regime. But in the near term, at least for the next couple of years, I still feel that the ATC product basket and the ELSS in particular will still remain relevant for a lot of investors. And speaking about other products and how it still remains relevant for the retirement purposes. So something like a PPF, for example, just take that as an example. Most of the investors, what they do is, say on the 1st of April, they put the whole 1.5 lakh limit that is available and just forget about it. So they don't mind the 15-year lock-in. They just want tax-free interest. And the main focus there is that they want safety of the principal. And after a period of time, it compounds tax at a tax-free rate of whatever 7.5, 8%. And most of the investors are happy with it. So I think that practice will still remain relevant irrespective of the tax breaks being removed. I think some investors will still prefer putting in money in those kind of products and earn tax-free income out of it. But Raj, coming back to my ELSS fund question, what I also wanted to know was कि जब हम ELSS funds को देखते हैं, just as a category, forget the tax benefit part of it, right? As a category, के ELSS funds अच्छे होता है कि मुझे tax benefit नहीं भी चाहिए. Man, even if I'm following the new income tax regime, can I still invest in ELSS funds? Are they still beneficial for me as an investor? So, one thing which ELSS funds help in is that they elongate the time horizon. उसमें एक खास बात ये है कि 3 साल का लॉक इन होता है, तो उससे क्या होता है कि अगर पैसे निकालने भी है तो निकाल नहीं सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन यू इन्वेस्टेड इन. सो ये कंपल्सिव 3 ईयर लॉक इन है, जिसके वजह से रिटर्न्स अगर आप देखें मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स के ये कैटेगरी में काफ़ी अच्छे रहते हैं बिकॉज लॉक इन रहते हैं. बाकी कैटेगरीज में फंड के रिटर्न्स अच्छे होते हैं लेकिन इन्वेस्टर के रिटर्न्स अच्छे नहीं होते बिकॉज वो काफ़ी पहले रिडीम कर लेते हैं उसमें से. तो डेफिनेटली ये जो 3 ईयर लॉक इन का जो पीरियड है वो बहुत अच्छा रहता है इन्वेस्टर्स के लिए. एंड हम हमारे टैक्स के और को इस तरीके से प्रमोट करने की ट्राई कर रहे हैं कि अगर खाली इंडिया स्पेसिफिक एक्सपोजर चाहिए तो टैक्स सेवर बहुत अच्छा है. वैसे भी हम इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि अगर इक्विटी में पैसा डालना है तो 3 साल के ऊपर का होराइजन हो तो ही डालना. तो डेफिनेटली टैक्स सेवर उसके लिए हेल्प. जैसे वो बोलते हैं कि वो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें क्या होता है, वो कंपल्सरी है कि आपको 3 साल डालना ही है, तो ऑटोमेटिकली आपका लाइक यू राइटली सेड टाइम होराइजन बढ़ जाता है, व्हिच इज सो करेक्ट. ओके, सो इन योर ओपिनियन जो हम नए इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं तो उनके लिए अगर उनको एक ऑल वेदर पोर्टफोलियो बनाना है तो विच इक्विटी फंड्स या फिर हाइब्रिड फंड्स should be a part of their portfolio, especially say in volatile markets like these. So yeah, it'll be nice अगर हमें आपका perspective मिले in terms of what kind of funds to hold and what kind of allocation should be given. I know आपने already हमें बोला है कि large cap and flexi cap is what we should focus on, but then can you just help us structure it a little more? Sure. So as I said, most of the investors don't need more than 4 to 5 funds in their portfolio, and that includes MFs, PMS, AIF, whatever products that are available in the market. I think
for a retail investor, say who is investing only in mutual funds and who has capital less than 50 lakhs, then I think five funds, three equity and two debt funds should take care of the corpus that the retail investor has. Out of the three equity funds, I would say that two can be the core portfolio, which is one large cap and one flexi cap fund. And the core should be around 80% of the portfolio, equity portfolio, and the balance 20% satellite would be, say, one small and mid cap fund. Uh, and then, depending on the age and the risk appetite of the investor, I think some allocation should also be there to the debt funds. Two debt funds should be more than enough. One on the shorter end of the curve, which takes care of the emergency needs and short-term needs, and the other one for the longer-term debt allocation. uh, Hybrid funds are only for those people who don't want to do the asset allocation themselves. Instead, leave it to the fund managers to do it based on the market levels. But I think for most of the investors, a combination of three equity and two debt funds and kind of 60-40 or 70-30 mix in terms of equity to debt should take care of itself. Fair enough. So I think that's a decent way of, looking at how you can build your portfolio. Okay. तो लेकिन एक और चीज जो ऑल वेदर पोर्टफोलियो में जो हमें लगती है, जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लगती है कि ये फंड्स काफी बोरिंग है, काफी लेस रिस्की हैं, एंड लाइक आई सेड, नए इन्वेस्टर्स हैं, दे वुड लाइक टू टेक मोर रिस्क, राइट? सो मोस्ट न्यू इन्वेस्टर्स वुड सीक एक्साइटमेंट इन द फॉर्म ऑफ सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स. तो ये जो सेक्टरल या थीमेटिक फंड्स होते हैं, वो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं? एंड in your opinion, should investors really invest in sector funds or small cap funds, and should they have it as the part of their portfolio? आपने एक अच्छी बात कही. सिंपल चीज़ें बोरिंग लगती है, लेकिन वो सिंपल चीज़ें ही अच्छी रहती है इन्वेस्टर के लिए. सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड्स एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें निवेश ना करे मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स के लिए तो ही बेटर रहेगा. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जब कोई सेक्टर हॉट रहता है या जब कोई सेक्टर अच्छा कर रहा होता है, तभी वो फंड का NFO आता है या वो फंड बेचा जाता है आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू. तो ऐसा होता है कि जब कोई भी रिटेल इन्वेस्टर उसमें निवेश करता है, तो उसके बाद के जो रिटर्न्स होते हैं, फ्यूचर रिटर्न, वो इतने खास नहीं रहते हैं. तो अनलेस कि आपको कोई सेक्टर के बारे में डीप नॉलेज हो और आपको लगता है कि ओवर लॉन्गर टर्म वो कोई सेक्टर अच्छा करेगा, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है जो ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अच्छा किया है, एंड उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू PSU बैंक्स. एंड अगर ये मार्केट शेयर शिफ्ट फ्रॉम PSU बैंक्स टू प्राइवेट सेक्टर कंटिन्यू रहेगा, तो ऐसे टाइप के सेक्टोरल फंड्स अच्छा करेंगे. बट ओवरऑल आई थिंक most of the investors should stay away from it unless it's there in the satellite portfolio and you can allocate a small part of the portfolio. But then can we say कि जो sectoral funds होते हैं उनका short term allocation होना चाहिए हमारे portfolio में? Like, should we time the sectoral funds? No, as I said, it's very difficult to time the sector. So most of the times you will enter a sector when it is very hot, and that's why the returns for you will not be that good. So unless it's a kind of a evergreen theme like a banking fund, I think it's very, very difficult to make alpha in most of these sector. And Okay. All right. Okay. Fair enough. Can you tell us a little bit about contra funds? Because I think contra funds are also something जिसमें आजकल बहुत सारे investors they seek excitement by investing in contra funds. So contra funds के लिए आपका क्या opinion? I think all these names and categories are labels given by people, but I think most of the fund managers and the investors have to be contra to be able to generate alpha over a longer period of time. Unless and until you buy something which everybody is selling, you will not be able to make a sizable alpha over a longer period of time. So I think the most important thing in playing contra to what the market is thinking is that you need to have a longer time horizon. Because again, if you are playing contra or thinking contra to what the market is thinking, it may or may not play out in the shorter term, and there will be a period where you will not be able to see returns in those kind of investments.
and then there's a turnaround in the sector, and eventually you make returns over a longer period of time. So that takes care of the underperformance which had happened in the earlier year. So I think if anyone is investing in contra funds, the time horizon has to be much higher, and the patience and the temperament should be there to see underperformance for 2-3 years in a row. So which means it is okay to invest in contra funds, लेकिन like you rightly said, लंबा समय हो के लिए invest करना चाहिए, time horizon लंबा होना चाहिए. Okay. So बहुत सारा हम कितनी importance देते हैं in terms of investing in equity funds, right? कि आप equity funds में invest कर सकते हैं, and there's a right time. Sometimes some people time it, some people don't time it. Some people say कि entry strategy होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, and रिस्क कम करने के लिए हम SIP के जरिए, STP के जरिए equity में invest कर सकते हैं. लेकिन exit strategy हमारी equity में क्या होनी चाहिए? Because I think understanding that point of exit is very important. And especially आपने बोला है कि 5 funds होने चाहिए portfolio में, 3 equity 2 debt. अब how would I know कि मुझे 5 funds में से किस fund में से कब exit करना है? I don't think any of us want to be like Abhimanyu जिसने चक्रव्यूह में घुस तो गया लेकिन उसको पता नहीं है कि निकलना कैसे है. Right? So, how do we manage the exit strategy in mutual funds? So firstly, I don't think that investors should exit from equity fund, and especially to time the market or to book profits when you think that the markets are heated. No one knows the top or the bottom, and hence you should stay away from timing the market. Returns can be very, very lumpy in equity markets, and the best thing that you can do is not to stop the compounding that the equity returns gives you. So I think timing the market, everybody enjoys doing. Everybody feels that some activity he or she is doing that will eventually give returns or additional returns to the investor. But I don't think most of the time it works that way. Having said that, one should exit equity funds only in case of, say, a goal being met. So, say, for example, an investor is investing to buy a house 10 years down the line, and he invested in equities for that specific goal. So, after 10 years, when he or she feels that the time has come to buy a house, at that time only the money should be removed from the equity fund. Or the second and the worst case scenario is when, say, the fund manager change happens, or when some policy or process change happens at the fund house level and it doesn't match the wavelength of the end investor. That's the only case where you redeem and then put it into another equity fund. So I think these are the only two cases where actually the end investor should exit an equity fund, and not for timing the market or booking profits. So, if an investor is feeling that he wants to do some activity and wants to time the market, then again he can play around with a small allocation of the equity fund. Say out of 100% in equity, he sells 5% and then reinvests it at a later date, maybe at a lower level. So they can play around with 5-10% of the equity allocation, but the core part of the portfolio should remain invested for a long time. So, I mean, अगर हम goal based investing कर रहे हैं तो like you rightly said, जब आप goal achieve कर रहे हैं is when you should exit from a fund. But the point is, अगर मान लीजिए मैंने किसी गलत फंड में इन्वेस्ट किया या फिर मैंने किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट किया जिसने मान लीजिए मुझे 5 साल में 10 साल में भी डबल डिजिट रिटर्न भी नहीं दिया है, then how do we decide if I should exit from that fund or should I still have the patience and continue, right? Yeah, I think so. One is that you should be familiar to the process that the fund house is following and the fund manager is following. If you feel that the process is right and the outperformance is short lived and it will eventually turn around, then you can stick to it. But I think 5 to 7 years is kind of a sweet spot in terms of evaluating the fund manager whether he is doing well or not. So, if in a 5 to 7 year kind of horizon also, if the fund manager is not able to beat the benchmark, then probably that's the time to evaluate it and maybe shift to another fund. I think less than 5 years, it's very, very difficult to evaluate the fund manager and the performance of the fund. Fair. All right.
So now, can you tell us a little bit about aggressive hybrid funds or aggressive hybrid funds जो है एक investor के portfolio में कितना importance रखती है? Because अगर हम देखें क्या जो retired investors हैं, because then there's a recommendation given कि as a retired investor आप hybrid funds में पैसा invest कर सकते हैं, better for you, right? from a risk return point of view. लेकिन क्या retired investors aggressive hybrid funds में invest कर सकते हैं? And क्या ये हमें इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद करता है? Are they also tax efficient? And एक ideal time horizon क्या होना चाहिए for aggressive hybrid funds? So 3-4 questions in one question. श्योर श्योर सो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें मिनिमम 65% इक्विटीज़ में होता है एंड बाकी का डेट में एलोकेशन होता है। तो डेफिनेटली रिटायरीज के लिए इतना भी सूटेबल नहीं होता है अनलेस कि रिटायरी के पास काफ़ी बड़ा कॉर्पस ऑलरेडी है डेट फंड्स में एंड थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहता है इक्विटीज़ को, तो थोड़ा बहुत एक्सपोजर ले सकता है aggressive hybrid funds को। ये एक ऐसी कैटेगरी है जो काफ़ी मिससेल हुई है पास्ट में, जहाँ पे गारंटीड रिटर्न्स दिए जाते थे कि पर मंथ आपको इतना मिलेगा एंड वो हिसाब से काफ़ी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते थे एंड कंपेयर करते थे एफडीज से जिसमें फिक्स रिटर्न मिलते हैं। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत मिससेलिंग हुआ था पास्ट में, बट आई थिंक इस कैटेगरी में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर एंड इन्वेस्टर को खुद का एसेट एलोकेशन नहीं करना है कि 70% इक्विटी एंड 30% डेट में डालना है, तो इंस्टेड ऑफ allocating it himself, he can put it in a aggressive hybrid fund and let the fund manager decide where to allocate this 70% in equity and where to allocate the 30% in debt. And let the fund manager decide what he wants to do with the money. Otherwise, I think for most of the investor, अगर एसेट एलोकेशन खुद करे तो वही बेटर रहता है। अगर इक्विटी फंड में अलग से पैसा डालें एंड डेट फंड्स में अलग से पैसा डालें तो बेटर है। But then, like I asked, क्या ये can returns from aggressive hybrid funds beat inflation and are they tax efficient? डेफिनेटली एक अच्छा पॉइंट बताया आपने, ये टैक्स एफिशिएंट है। तो अगर रिटायरमेंट के बाद भी आपका टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट है, बिकॉज एज अ इक्विटी फंड ये कैटेगराइज होता है। तो कुछ एच एन आईज के लिए एंड कुछ इन्वेस्टर्स के लिए जिसका टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है उनके लिए ये काम आ सकता है। So, talking about taxation, I think all of us know कि जब हम equity की बात करते हैं, equity is definitely more tax efficient compared to non-equity, instruments. लेकिन non-equity taxation भी बहुत अच्छा था in the long term. So, long-term capital gains in non-equity was quite, we had the indexation benefit and so on. लेकिन अभी सबसे बड़ा debate industry में यही चल रहा है कि the taxation in the non-equity space, which has obviously changed in the recent past. So, according to the recent amendments for all our viewers, जो आपके gains होते हैं from debt mutual funds, जिसमें basically debt mutual funds में have less than 35% in equity, and that's how they're taxed, called as non-equity. तो उसमें जो आपको they are now taxed at marginal tax range, जो पहले होता था कि अगर आपने 3 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो आपको indexation benefit मिलता था, जो obviously आपको नहीं मिलेगा. So, इसकी वजह से Raj, what do you think will be the impact on debt funds, gold funds, जो non-equity taxation follow करते हैं, international funds? All these funds पे क्या impact होगा? Do you see a big impact happening? Yeah, let's talk about debt funds first. So I think it's a level playing field now for debt funds versus fixed deposits and other debt products that are available in the market. So definitely there will be some impact, but there are some advantages which are still there with the debt funds, which the other debt products don't have. So just listing out so everybody knows about the disadvantage, that is the taxation part, but there are some advantages which some people haven't thought through. I think I'll just point out those advantages. So one is that in debt funds, you don't pay tax until you redeem. So say you invest 1 lakh in FD, Bank FD, and you earn 8% interest on it. Every year you have to put that interest income to tax, irrespective of whether you redeem the FD or not. Whereas in debt funds, if you are earning 8% return, that compounds over a period of time and you don't pay tax until you redeem the mutual fund.
I think one advantage is that. Second is in bank FDs, you need to determine the time horizon before investing, whether you want a 2-year FD or a 5-year FD. Whereas if you are not investing in a target maturity fund, in most of the open-ended debt funds, you can decide the maturity later. So for most of the retirees, there is no time horizon which is decided beforehand. They are saving for their retirement and they don't know how long they will live. So I think for those kind of investors, debt funds still remain very relevant. Third is in bank FDs, you cannot withdraw partially. So if you are invested 1 lakh, but you need only 50,000, you cannot do that. Whereas in debt funds, that is possible. And last but not the least is a very important thing, which is systematic withdrawal plan. So in debt funds, you can do that. And in the initial withdrawals that you make, you pay very less taxes because a major part of the SWP comes out of the capital amount and not out of the gains. So the initial installments you pay lesser tax, and the later installments you pay higher tax. So I think these are the advantages that are still there with the debt funds, and still I think it remains a relevant part of the portfolio for most of the investors. Also, what we need to look at is that if we look at the debt funds AUM, most of the AUM was from the shorter end of the curve, which was either liquid funds, money market funds, or ultra short term fund, and most of the money was corporate money. So, I think that doesn't get impacted by this. Only the retail money which had started to come in this segment, especially the target maturity fund, that will get impacted over a longer period of time. Uh, Also, one thing which will get impacted is the overall development of the corporate bond market. I think that's a very important point that the government, I think, has missed in passing this regulation. Mutual funds helped in the development of the corporate bond market, and looks like if uh, uh, the volumes dry up at the longer end of the curve, it will be very, very difficult to develop the debt market, and the talks of India being included in the global bond index, I think, goes for a toss. So that's a very important point that I think the government missed. If we talk about the other funds which will get impacted, gold funds, I think, will die eventually if this existing taxation remains, given that sovereign gold bonds will win hands down versus any gold ETF or a gold fund. So, uh, unless the investor doesn't want to lock in his money for 7-8 years, then probably gold funds make sense. But otherwise, I think sovereign gold bonds win hands down. International funds, I think, so as it is, most of the funds were stopped from remitting further money because of the industry limit being hit. So that had already impacted most of these international funds. And again, given that they will be taxed at the marginal tax rate, I think that also will eventually bite the dust over. So you're saying that to some extent, different categories of funds will have an impact. क्योंकि अगर हम गोल्ड फंड्स की बात करें तो गोल्ड इज एन इम्पॉर्टेंट एसेट क्लास, थोड़ा बहुत एलोकेशन गोल्ड में होना चाहिए. और अगर लिक्विडिटी चाहिए तो शायद लोग फिर भी गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर लिक्विडिटी इज नॉट एन इशू देन SGBs is what they would be looking at for sure. Correct. And अगर liquidity चाहिए तो maybe physical gold will be much better than gold funds, because physical gold के लिए अभी भी वो taxation advantage रहता है compared to gold fund. So I think probably एक unintended consequence है इसका, but probably physical gold buying वापस चालू हो जाएगा. And when we say physical gold, I'm guessing gold coin won't be. Correct. Correct. Okay. Okay. So actually, मैं आपको ये question पूछने वाली थी about bank FDs, but I guess you answered that in detail, so let me not get into that. So let's quickly talk about this question about your investment journey, your personal investment journey, because I think हम सबको all investors would like to learn from experienced investors like you. So please tell us a little bit about your personal investment journey and some advice for all the investors. Definitely. So I started out my journey sometime in 2012-13. So for a large part of the first couple of years, I think the markets went nowhere. So
that taught me patience at the start of the career itself. And then you had the big Moody rally in 2014, which took care of the underperformance in the first couple of years. I think equanimity is something which the markets taught me in the initial years itself, where you need to be uh, uh, grounded. That equity markets returns will be lumpy. It will not be a straight line ride, and you need to be ready for volatility in the returns as well as the income that you want, because your income is also dependent on the market. So that is something which you need to be aware of. Uh, in good years, don't spend too much, and in bad years, maybe you can take some money out of your savings, but over a longer period of time, have a stable increase in your standard of living instead of spending frivolously in very good years or bull markets or something like that. Okay. Other thing is that stick to your goals and invest with that mindset. Have a asset allocation in place and stick to that for a longer period of time. Have moderate return expectations from the equity markets. Don't have abnormal expectations of 20% plus. So some years you may get those returns, but over a longer period of time, have moderate return expectations. There is no other asset class which can beat inflation like equity does, and I think equity beats any other asset class on beating inflation. So that is something which is there. Another thing which I have learned over the years is that losing capital is a disaster. So avoid mistakes where there is a chance of permanent loss of capital, because that stops your compounding process. So lower return is fine, but don't compromise on the quality of the promoters or the business, because losing capital is something which will take you 2 3 years back, and then coming back will take a longer period of time. Even if you earn a moderate return, that's fine as long as you don't lose capital. Oh, perfect. All right. And how about some book recommendations for new investors? Sure. So there were 4 or 5 books which I was told to read when I joined PPFAs in 2013, and those books still remain very, very rare. So I'll just name those books. Two are by Peter Lynch. One is One Up on Wall Street. Other one is Beating the Street. I think the investment style that Peter Lynch had a big impact on how I looked at investing. Another is Common Stocks and Uncommon Profits by Philip Fisher. Uh, then there's Essays of Warren Buffett, which almost all the investors need to read because of the experience and the knowledge that he gives through his letter. And last but not the least is the book by our founder, Mr. Parag Parikh. It's Value Investing in Behavioral Finance, which gives the behavioral side of it, and also some flavor of the Indian markets, which no other book can give. So I think these 4 or 5 books can take care of the initial reading requirement that any retail investor. Sure. Thank you so much, Raj. Thank you for all your valuable time. And I'm sure हमारे सारे जो viewers हैं उनको बहुत सारी learnings मिलेंगी इस particular conversation से. So thank you for your time, and we hope to see you soon. Take care. Thank you so much for having me. Wow, what a wonderful and engaging conversation that was with Mr. Raj. I hope all of you had a good time listening to this conversation. And I'm sure आप सब हमारे अगले एपिसोड का भी बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं. तो क्विकली जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि इंडिया का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $3 ट्रिलियन से नीचे गया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 9 months. एंड ये इसलिए है क्योंकि जो है यूरोप और यूएस बैंक्स में काफी इंस्टेबिलिटी है विच इज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर. तो मिस्टर राज सेस कि जब कोविड शुरू हुआ था तब इंटरेस्ट रेट्स काफी कम हो गए थे, जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गया था, एंड दैट लेड टू इन्वेस्टर्स गेटिंग डिसेंट रिटर्न्स, क्योंकि तब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा था. लेकिन अब अगर देखें तो इंटरेस्ट रेट्स जो है काफी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लिक्विडिटी जो है काफी टाइटन हो रही है, एंड इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो इक्विटी मार्केट से सिर्फ मॉडरेट रिटर्न्स ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और स्ट्रिक्टली जो इन्वेस्टर का टाइम होराइजन होना चाहिए इक्विटी के लिए वो कम से कम 3 साल होना चाहिए.
फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है जैसे ग्रोथ, वैल्यू या ब्लेंडेड स्टाइल, वो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितना इंपॉर्टेंट होता है वाइल सिलेक्टिंग एन इक्विटी फंड। तो मिस्टर राज सेज कि आइडियली जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल होते हैं वो शायद उतना मैटर नहीं करते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो आपके टाइम होराइजन और रिस्क एपेटाइट के साथ मैच करना चाहिए। और आप जो भी इन्वेस्टमेंट स्टाइल सेलेक्ट करते हैं उसके साथ आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टिक करना चाहिए। फिर हमने थोड़ा लार्ज कैप फंड्स के बारे में डिस्कस किया कि एक इन्वेस्टर के इक्विटी पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली इन वॉलेटाइल मार्केट्स लाइक दीज। तो मिस्टर राज सेज कि जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो एक इन्वेस्टर के इक्विटी पोर्टफोलियो का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, irrespective of where the market stands। और एक जो इन्वेस्टर का कोर पोर्टफोलियो होता है उसका 50% एलोकेशन जो है इन्वेस्टर वो लार्ज कैप फंड्स में कर सकता है। इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि बहुत सारे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते हैं कि उनको किस तरीके के इक्विटी फंड्स या हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मिस्टर राज सेज कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं वो लार्ज कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और जो है आपका कोर पोर्टफोलियो, जो इक्विटी पोर्टफोलियो का कोर पोर्टफोलियो है वो 80% होना चाहिए, सैटेलाइट पोर्टफोलियो 20% होना चाहिए। और सैटेलाइट पोर्टफोलियो में आप एक स्मॉल कैप फंड और एक मिड कैप फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम हाइब्रिड फंड्स की बात करें तो मिस्टर राज सेज कि हाइब्रिड फंड्स में आपको पैसा तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपको अपनी असेट एलोकेशन खुद नहीं करनी है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर एक इन्वेस्टर को एक इक्विटी म्यूचुअल फंड से एग्जिट करना है तो क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो मिस्टर राज सेज कि एक इन्वेस्टर को अपने म्यूचुअल फंड से एग्जिट तभी करना चाहिए जब उनके फाइनेंशियल गोल्स मीट हो रहे हैं। और हाउएवर अगर मान लीजिए एक फंड में फंड मैनेजर चेंज हुए हैं या फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चेंज हुई है और अब वो जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो आपके रिस्क प्रोफाइल के साथ मैच नहीं करती है, तब जो है आप उस फंड से एग्जिट कर सकते हैं। फिर हमने कुछ फाइनेंस बिल में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं रिलेटेड टू द टैक्स इन डेट फंड्स, गोल्ड फंड्स एंड इंटरनेशनल फंड्स, उसके बारे में भी डिस्कस किया। सो मिस्टर राज सेज कि अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है बिटवीन डेट फंड्स, बैंक एफडीज एंड सम अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। और देखा जाए तो डेट फंड्स जो है अभी भी उन थोड़े एडवांटेजेस हैं कंपेयर टू बैंक एफडीज, क्योंकि बैंक एफडीज में जो है आपका जो टैक्स एप्लीकेबिलिटी होता है वो अक्रूवल बेसिस पे होता है एंड नॉट व्हेन द मनी इज रिडीम्ड। लेकिन डेट फंड्स में आपको जो टैक्स एप्लीकेबल होता है वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है जब आपने अपना पैसा डेट फंड से रिडीम किया है। एट द सेम टाइम अगर हम फिजिकल गोल्ड की बात करें तो शायद इट्स अ लिटिल मोर टैक्स एफिशिएंट नाउ कंपेयर टू गोल्ड फंड्स। फिर हमने मिस्टर राज से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम हिज पर्सनल इक्विटी इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो मिस्टर राज सेज कि सबसे पहले जो है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी, एक इन्वेस्टर को जो है अपने पोर्टफोलियो, इक्विटी पोर्टफोलियो में जो रिटर्न्स है उसमें वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। ऑल्सो जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमें ओवर स्पेंड नहीं करना चाहिए बल्कि हमें अपनी सेविंग्स बढ़ानी चाहिए फॉर बैड टाइम्स। ऑल्सो एन इन्वेस्टर शुड स्टिक टू हिज फाइनेंशियल गोल्स और इक्विटी से मॉडरेट रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए, क्योंकि इक्विटी इज द बेस्ट एसेट क्लास टू गिव इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स ओवर लॉन्ग टर्म। फिर हमने मिस्टर राज से कुछ बुक रिकमेंडेशंस मांगे स्पेशली फॉर न्यू इन्वेस्टर्स, एंड मिस्टर राज सेज वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच इज अ वेरी गुड रीड, या फिर कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स बाय फिलिप ए फिशर इज अ गुड रीड, फॉलोड बाय वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड बिहेवियरल फाइनेंस बाय पराग पारिक। ये सारी बुक्स आपको बेटर इन्वेस्टर बनने में मदद कर सकती हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर एपिसोड. We try our best to get you, the best questions, the best speakers in all our episodes. So I hope all of you will continue to watch our series. Please do like this video, share it with everyone, and of course, do subscribe to the Groww Mutual Fund channel. And thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.